हेलो गाइस, मैं हूँ जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके थिंकर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट बुक्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, ग्रेजुएशन में पूछी जाती हैं, मास्टर्स में ज़रूरी हैं। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंस रखती हैं। साथ साथ अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बुक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं कि हमारी कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं। अगर हम इन बुक्स को याद ही कर लेते हैं, है ना, एक फैक्चुअल चीज़ है जिसको हम याद कर लेते हैं तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे सीधे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि आज हमारे पास जो है वो बुक्स कौन सी हैं। बता दूं ये दोबारा कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। ओके, अगर हम यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक का रेफरेंस है वही आपके जो मेंस है उसको लिखने या उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। पहला है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय केनेथ वॉल्स इन 1979। ओके, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो केनेथ वॉल्स के द्वारा लिखी गई है 1979 में और ये रियलिस्टिक थिंकर है हमारे। ओके, एक बहुत ही बड़े रियलिस्टिक, न्यू रियलिस्टिक थिंकर जो है वो माने जाते हैं। ओके, क्या है बुक का नाम? द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय केनेथ वॉल्स 1979। ओके, इम्पॉर्टेंट बुक है, you will have to learn it. Okay, Man's the State and the War by Keneth Walls। ये भी Keneth Walls की है। Man the State and the War कब पब्लिश हुई? 1959 में। Man the State and the War by Keneth Walls in 1959। ओके, ठीक है, Keneth Walls की है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रियलिस्टिक थिंकर है, न्यू रियलिस्टिक थिंकर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस बाय मॉर्गेंथ्यू 1948। पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस बाय मॉर्गेंथ्यू इन 1948। ओके, किसके द्वारा है? ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी गई है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। Okay, the struggle for power and peace by Morgenthau in 1948. Okay, next देखते हैं scientific man versus power politics, scientific man versus power politics. Okay, by Morgenthau 1946, scientific man versus power politics by Morgenthau 1946. ओके, इम्पॉर्टेंट बुक है ये भी एक्चुअली मॉर्गेंथ्यू की। तो मॉर्गेंथ्यू की सारी बुक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, तो याद करनी बहुत ज़रूरी बैठ जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द 20-year क्राइसिस, द 20-year क्राइसिस 1919 से 1939। ओके, किसकी है? बाय E.H. कार। The 20-year crisis 1919 to 1939 by E.H. Carr in 1939। ओके, इम्पॉर्टेंट बुक है ये भी। नेक्स्ट डिप्लोमेसी बाय किसिंगर, हेनरी किसिंगर। ओके, डिप्लोमेसी बाय हेनरी किसिंगर कब पब्लिश हुई? इन 1994। ओके, डिप्लोमेसी बाय हेनरी किसिंगर कब पब्लिश हुई? 1994 में। ओके, इम्पॉर्टेंट बुक है ये भी। पीपल, स्टेट एंड फियर, पीपल, स्टेट एंड फियर बाय बैरी बुजान, पीपल, स्टेट एंड फियर बाय बैरी बुजान
in 1983. In 1983. Okay. People, State and Fear by Barry Buzan in 1983. Okay. Next देखते हैं Peace and War. Peace and War किसके द्वारा है? रेमंड एरन. किसके द्वारा है? रेमंड एरन. कौन से ईयर में? 1968 में. ओके. पीस वार रेमंड एरन 1968. ओके. अ वर्ल्ड रीस्टार्ट. ओके. अ वर्ल्ड रीस्टार्ट by Kissinger in 1957. Okay, a world restart by Kissinger 1956. Sorry, 57. Sorry, a world restart by Kissinger in 1957. Okay, political realism and political idealism by John Herz. Political realism and political idealism किसके द्वारा है? इज बाय जॉन हर्ट्ज. ओके. नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी. अमेरिकन डेमोक्रेसी बाय जॉर्ज कैनन. अमेरिकन डेमोक्रेसी बाय जॉर्ज कैनन. ओके. Defending the national interest. Defending the national interest by Stephen Krasner. Defending the national interest by Stephen Krasner in 1978. What is history? What is history by E. H. Carr. What is history by E. H. Carr. Okay. International political economy. International political economy by Robert Gilpin. International political economy by Robert Gilpin. Okay. The Great Illusion. The Great Illusion by Norman Angell. The Great Illusion by Norman Angell in 1912. In 1912. Political Theory and International Relations. Political Theory and International Relations by Charles Bates. Political Theory and International Relations by Charles Bates in 1979. End of History and the Last Man. End of History and the Last Man by Fukuyama in 1992. End of History and the Last Man by Fukuyama in 1992. Democracy from
city-states to cosmopolitan order. Democracy from city-states to cosmopolitan order by David Held. In 1991. Ways of War and Peace. Ways of War and Peace by Micheal Doyle. Ways of War by Peace in Micheal Doyle in 1997. Impearilism a study. Impearilism a study, John Hobson. Impearilism a study by John Hobson in 1902. The League of Nations and the Rule of Law. The League of Nations and the Rule of Law by Alferd, zimneran. The League of Nations and the Rule of Law, Alferd, zimneran in 1936. New Left Review. New Left Review by Barry Anderson. New Left Review by Barry Anderson in 1976. New Dependency. New Dependency by the Santos. New Dependency by the Santos. Capitalism and Underdevelopment. Capitalism and Underdevelopment by A.G. Frank. Capitalism and Underdevelopment by A.G. Frank. The True World. The True World by Gultang. 1980. The True World by Gultang in 1980. Writing and Difference. Writing and Difference by Darrida in 1967. Writing and Difference by Darrida in 1967. ओके, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं ये. Margin of Philosophy. Margin of Philosophy by Darrida in 1972.
Spectre of Marx, Spectre of Marx by Derrida in 1993. Spectre of Marx by Derrida in 1993. Okay. Banana, beaches and bases. Banana, beaches and bases by Enon. By Enon. Banana, beaches and bases by Enon. The transformation of political community. The transformation of political community by Linklater in 1998. The transformation of political economy, Linklater in 1998. Social Theory of International. Social Theory of International by Alexander Vendit. Social Theory of International by Alexander Vendit in 1999. Approaches to World Order. Approaches to World Order by Robert Cox. Approaches to World Order by Robert Cox. Important book है. The Political Economy of Plural World. The Political Economy of Plural World by Robert Cox. Cooperative under Anarchy. Cooperative under Anarchy by Keneth Oye. Cooperative under Anarchy by Keneth Oye. तो इसी के साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ. कोशिश करें कि वीडियो को पूरा सुने ताकि आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी रह ना जाए. ओके, तो गाइस फिर से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही जीविशा क्लासेस के साथ जो बने रहें. मैं हूँ जीविशा और जीविशा क्लासेस पर बने रहें. थैंक यू.